Hello students, this is time for our English language class. We are in chapter 7. The name of the story is Everest Reaction. It is by R.K. Narayan. We already learned half of the story. We already did half of the story and already I explained you the story. And I'm telling you again what is the story about. Actually, Thambi, a boy who is known to make humor on different things, and he was inquisitive and a curious mind who always seek for the knowledge and listen to the radio at neighbors' home to get updates regarding latest happenings around the world. Uh, this time he was telling the truth which the villagers believed after Hillary and Tenzing had climbed Mount Everest. And you know, Mount Everest was climbed first on 29th May 1953. Mount Everest, the highest peak of the world. Hillary and Sherpa Tenzing Norgay reached there on that date. Today I am going to tell you half of the story, the remaining part of the story. I just told you the first half of the story. Now I am telling you the remaining part of the story. As I told you before, the Thambi got the news that Tenzing and Hillary climbed Mount Everest, and he got the news and spread it in his elders, between his elders. And now what happened? Just have a look. But there it is, said the boy triumphantly. Hillary and Tenzing, the elders, took in the news with a sort of gloomy acceptance. This was a piece of news for which the world had waited for a century or more. And now, instead of arriving in a spectacular manner with a fanfare of trumpets, it was reaching them through Thambi, the habitual purveyor of news tidbits. Actually, although Thambi told them that news triumphantly, मतलब खूब बहुत ही उत्तेजक ढंग से वो बोले, but the elders took the news in a sort of gloomy acceptance, because they thought that after बरसों से ये खबर का इंतजार था, तो ये खबर इतनी आसानी से ऐसे आ जाते हैं, ऐसे तो ठीक नहीं लगा बड़े बड़े लोगों को. इसलिए थम्बी ने लाया ये न्यूज़, ये द हैबिचुअल पार्वेयर ऑफ द न्यूज़. द हैबिचुअल पार्वेयर मतलब जिसकी हैबिट ही था कोई भी न्यूज़ सप्लाई करने के लिए, वो ये ऐसा न्यूज़ लाया. ये सोच के वो लोग हैरान थे. Soon they had to accept it for a fact. For the rest of the day, they were bandying about expressions such as calm and cold. No two persons agreeing on the definition of this expression or their origin. ये फैक्ट वो लोग ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाए. बाकी दिन वो लोग बैंडिंग, मतलब आर्गुइंग, एक दूसरे से बहस करते रहे. कोई माने या कोई नहीं माने, ये सच है कि नहीं, और एग्री कर सकते हैं हम लोग कि नहीं, ऐसे बहस करते रहे. Their reactions were interesting to watch. Somehow, there was a general sense of disappointment at the fact that the Everest had been conquered. It would have been so nice to have left the Everest as an unassailable part of the earth. What is the meaning of unassailable? Actually, which cannot be defeated. The meaning of unassailable is which cannot be defeated, जो कोई भी जीत नहीं सकता. एवरेस्ट ऐसा एक माउंटेन पीक है, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कोई जीत नहीं सकता. ये ठान ली सब लोगों ने. ये जब वो टूट गया, ये थिंकिंग जब टूट गया, तो उन लोगों को लगा कि ये कैसे हो सकता. ओके, said one, एक ने कहा, it is not good to think that human beings have conquered everything under the sun. It does a lot of good to
to the human spirit to feel that there are still many things beyond our reach. Human beings should not become so proud. तो एक ने कहा कि ऐसे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग सब कुछ कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, हम लोग बहुत प्राउड हो गए ऐसा. Said an enthusiast, a masterpiece of planning. It restores one's faith in human endeavor. Clear-headed planning is the most difficult thing to achieve. I challenge anyone here to plan a journey to Tirupati and get through without having to alter it half a dozen times on the way. Actually, एक ने कहा, हर एक ने कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहे. तो एक ने ऐसा कहा, एक इंथुसियस्ट, मतलब एक जो बहुत ये a person who is very interested in so वो कहा कि ये प्लानिंग, इसके पीछे ये जो काम हुआ है, इसके पीछे प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. प्लानिंग, क्लियर हेडेड प्लानिंग से सब कुछ हो सकता है. It depends, said another, on starting the whole thing at the right moment from an astrologer's point of view. The secret of success lies in getting hold of the horoscope of the persons concerned and fixing the time accordingly. If it is done accurately, it will solve 90% of the difficulties of any undertaking. तो एक ने कमेंट किया ऐसे कि it depends, प्लानिंग में सब कुछ नहीं है. Actually, in our India, astrology is a main part. एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब कुछ बहुत सोचते हैं और मानते भी हैं. तो एक ने कहा कि एक्चुअल टाइमिंग एंड हॉरोस्कोप, इसके पीछे जो लोग ये काम कर रहे हैं, उन लोगों की हॉरोस्कोप, ये भी एक मायने रखता है ऐसा. And so, no marks for preparation, knowledge, study and scientific application and so forth. और एक ने कहा तो हॉरोस्कोप एंड एस्ट्रोलॉजी यही सब है, नॉलेज, स्टडी, साइंटिफिक एप्लीकेशन, ये कुछ नहीं. इवन अ स्टार्ट, तो वो क्या आंसर दिए जो हॉरोस्कोप के बारे में सोचते थे. इवन अ स्टडी बिकम्स सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज बिगन एट द राइट मोमेंट. आई एम श्योर they must have avoided Rahu Kalam and other inauspicious moments while beginning their arrangement. Actually, Rahu Kalam मतलब जो एक बैड टाइम, राहु कलम ये इंडियन एक वर्ड है, इसका मतलब है बैड टाइम. inauspicious moments मतलब unlucky moments. I am going to write to Colonel Hunt to see the horoscope of the members of the expedition and also tell me the exact hour at which they started their preparations. Astrology is a great science, sir. तो वो तो ठाने ली ना, नहीं, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं ये राहु कलम गुड टाइम पे सब कुछ स्टार्ट करना, और जो लोग ने ये एक्सपीडिशन की उन लोगों का हॉरोस्कोप, ये सब कुछ मिला के ये पॉसिबल हुआ कि एवरेस्ट क्लाइंब कर सका कोई. नाउ दे हैव मेड अ स्टार्ट, began another. I believe going to the Everest will become common. It may almost become a holiday resort. It is going to be difficult to come across a person who has not had a holiday on the Everest. और एक ने कहा, और एक ऐसे अक्सर होता है, कुछ एक कुछ समाचार के बारे में हर एक कुछ ना कुछ ओपिनियन कोई ना कोई देता है. तो और एक ने ऐसा ओपिनियन एक पर्सन ने की कि अब एवरेस्ट तो एक बार क्लाइंब कर चुके, बस अब क्या होगा, वो हॉलीडे रिसोर्ट बन जाएगा, उधर सब कोई ना कोई जाता ही रहेगा. With so much ice, said another, with a business temperament. Suppose they find some means of pouring all that ice and sending it down, it would revolutionize the cold storage industry completely. In the end, it may become necessary to find some other employment for the members now attached to the refrigeration and air conditioning industries. देखो, और एक बात, और एक ने ये बोली कि
एवरेस्ट में क्या है, उधर तो माउंट एवरेस्ट में हाइट, उधर तो उसका कितना ऊंचाई है, उधर तो उधर आइस ही आइस है। तो एक ने ऐसा एक एक्सपर्ट ओपिनियन ऐसा दी कि उधर इतना आइस है तो वो आइस लेके उधर वो नीचे चले आएंगे और एक वायरिंग मतलब डिग करके वो आइस लेके उधर आके वो क्या करेगा, तो एक इंडस्ट्री कोई खोल लेगा, कोई कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री डेवलप करेगा, ऐसा बात भी कर रहे थे। ये कितनी, देखो कितनी क्या क्या मतलब क्या कौन क्या बातें करता है, ऐसे फनी बातें। Further discussion on this subject was stopped when Humvee burst into the room in his usual lightning manner with the announcement, "My friend's father, who had gone hunting last night, it seems has bagged 5 tigers simultaneously." तो सब कुछ ये इतना तो एवरेस्ट क्लाइंबिंग के बारे में इतना ओपिनियन हो रहा था, इतना बातें हो रहा था दिन भर, तो ये स्टॉप हो गया कब, जब हम भी फिर एक नई एक न्यूज लेके आए। वो न्यूज क्या था, वो ऐसा बस्ट कर रहा था ये न्यूज, जैसे ये माय फ्रेंड्स फादर, उसका उसकी कोई दोस्त का पिताजी एक साथ 5 टाइगर को किल कर ली, हंट कर ली। तो ये था ये story, Everestation, a very important story and funny too. How news, any news के बारे में हम लोगों का ओपिनियन कैसा अलग अलग सा ओपिनियन होता है, इधर ये ही बोला गया। तुम लोग ठीक से प्लीज रीड द story once again and try to understand whole the story. And in our next class, I'm going to tell you about the author Arkenara and the comprehension and all the question answers on the story. Okay.